Hello everyone, I'm Brian. Today I'm reacting to the Sanskrit Iceberg Explained. So I've seen like one or two other icebergs before. They seem very interesting. Let's go ahead and give this video a shot. I probably won't be talking too much. I don't think I know very much about Sanskrit, obviously. But anyways, let's just go to give this video a अहो shot. मित्राणि कथं भवन्ति सर्वे अस्माकं यूट्यूब चैनल इंडियन पिक्सेल्से भवतः स्वागतमस्ति। अद्य वयं संस्कृतस्य रोचकत्वानि तथ्यानि अन्वेष्टुम् आरब्धुं भवतः सज्जा किम् आगमः याम्। तो दोस्तों, जैसा कि आपने फिगर आउट कर ही लिया होगा, आज हम बस एक भाषा के बारे में बात नहीं करने वाले, हम एक सभ्यता की फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देव भाषा संस्कृत के बारे में। बट चिंता मत करो, ये वीडियो कोई बोरिंग एनपीटीएल का वीडियो लेक्चर नहीं होने वाला। हम संस्कृत का अध्ययन करने वाले हैं विद अ फन न्यू ट्विस्ट इन एन आइसबर्ग फॉर्मेट, जिसे फन फैक्ट संस्कृत में कहा जाता है हिम स्तंभ। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉप, फैक्ट्स जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, वो फैक्ट्स जो मोस्टली सबको पता होता है, और फिर धीरे धीरे करके हम जाएंगे डीप अंदर ऑफ द समंदर, जहाँ पे हमें मिलेंगे कुछ रहस्यमयी फैक्ट्स जो कि होपफुली आपका दिमाग हिला के रख देंगे। सो चलिए विदाउट मच अडू एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। पहला फैक्ट है कि संस्कृत इज रेयर बट इट इज एवरीवेयर। 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया में बस 25,000 से कम लोग हैं जिनकी मातृभाषा संस्कृत है। ये नंबर्स इतने कम होने के बावजूद संस्कृत का छाप सब तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत हम पाते हैं हमारे करेंसी नोट्स में, हमारे नेशनल एम्ब्लेम में, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लोगोज में। इनफैक्ट हमारा नेशनल एंथम भी संस्कृताइज्ड वैरायटी ऑफ बंगाली है, और हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वो तो पूरा संस्कृत में। इंडिया में जब हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वी से नमस्ते। दिस वर्ड ऑल्सो इज अ संस्कृत वर्ड, देयरफॉर संस्कृत इंडिया के ब्लड स्ट्रीम में बसा हुआ है। चलिए ओवर टू द नेक्स्ट फैक्ट। गाइस, दूसरा काफी कॉमनली नोन फैक्ट ये है कि संस्कृत इज द मदर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। भारत के टॉप 120 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस के Sorry, I'm gonna pause. I'm kind of, holy smokes, is this like all the language in the world? Dravidian, Austro, Tibeto, Burmese. So I'm going to pause the video because I'm going to look at this real quick. Okay, so this is clearly not the language of the world, but the 120 languages of India. I didn't see that up top. I was too busy mesmerized by everything here. I do see English down there. And I do see Hindi, which also has a dot, which has that outer band. I'm not sure how to interpret this. I'm assuming the mother language being Hindi, and then these are all the subcategories of Hindi, maybe? I'm sure it's going to explain pretty soon, but this is what I'm thinking at the moment. Punjabi has Sambalpuri, Bagri, and Batiali. I'm probably butchering this pronunciation, but I did the best I can. I'm assuming that's how it's interpreted, but let's go ahead and see how he says it. लिस्ट में 78 की ओरिजिन संस्कृत से ही है। कई Oop. So, 78 की 78. Sanskrit. Sanskrit 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. की ओरिजिन संस्कृत से ही है। कई सारे भाषाएं जैसे कि बंगाली, मराठी, ओडिया, पंजाबी, अवधी, गुजराती, असमीज, इन सब का बर्थ संस्कृत से हुआ था। दूसरे लैंग्वेजेस लाइक तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम संस्कृत से डायरेक्टली इमर्ज तो नहीं हुए, बट संस्कृत का इन पे एक डीप इम्पैक्ट रहा है। Yeah, I mean, it makes sense. Like, my language is mixed between three languages. And then you look at English, it's mixed between like Latin and a whole bunch of other languages because it's so cultural and area kinda, and we all as human beings we kind of just all mix together. So we're gonna have a lot of root languages where words come from. फैक्ट क्या तुम्हें पता है कि इंडोनेशिया के एक आइलैंड जावा में बोले जाने वाली जावानीज लैंग्वेज में भी संस्कृत का हमें इन्फ्लुएंस दिखता है। इंडोनेशिया का I'm sorry,
Indonesia. My brain is being dumb right now. I think of Java as like coffee, Java chip. Then Javanese, come on, it's like Japanese. You gotta laugh where you can, man. Enjoy life. But that's pretty interesting. I never knew that. If this is true, I mean, it's kind of funny at the same time. कि Pretty interesting. इंडोनेशिया के Indonesia of Java, huh? I wonder if that's where the word comes from now. Actually, now that I think about it, I wonder if Java comes from this. Every time if I ever get a Java chip, whatever, or Java coffee or whatever, I'm going to be thinking about this now. And I just got to look that up now. Where did the word Java comes from these people? I wonder if they just made it up on their own and just so happens to have this in it. एक आइलैंड जावा में बोले जाने वाली जावानीज लैंग्वेज में भी संस्कृत का हमें इन्फ्लुएंस दिखता है। इंडोनेशिया का नेशनल एम्बलम है द गरुड़ पंचशील, जिसके नीचे लिखा होता है इंडोनेशिया का मोटो भिन्नेका तुंगलिका, जिसका मतलब है कि भिन्नता में ही एकता है। प्रीटी सिमिलर टू संस्कृत, नहीं? तीसरा फैक्ट, संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है विच बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। संस्कृत को लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, पर्शियन और मैंड्रिन की तरह एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है, यानी कि ये एक बहुत पुरानी भाषा है जिसका एक बहुत बड़ा लिटरेचर भंडार है। मजे की बात लेकिन ये है कि संस्कृत इंडिया की दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज है। पहली थी, एनी गेसेस? तमिल। संस्कृत ऑल्सो बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, एक बहुत बड़ी डाइवर्स फैमिली जिसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है और इंग्लिश भी, ओडिया भी और पोर्तुगीज भी। मतलब कि इटालियन और भोजपुरी चचेरे ममेरे भाई बहन टाइप के ही हैं। इनफैक्ट क्या तुम्हें पता है कि द होल फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स का इमर्जेंस हुआ था जब कुछ अंग्रेजों ने नोटिस किया कि भाई उनकी यूरोपियन लैंग्वेजेस और संस्कृत में कितने सारे पैरेलल्स हैं। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। देखिए कैसे लिथुएनियन और संस्कृत में भी बहुत सारे पैरेलल्स एग्जिस्ट करते हैं। Sanskrit and Lithuanian, Sunus, Sūnus, Vyras, Vyras, Virkas, Vilkas, Tava, Tavo, Pada, Pēda, Agni. Ugnis. फाइनली द लास्ट फैक्ट ऑफ आवर फर्स्ट टायर, संस्कृत दुनिया की वन ऑफ द रेयरेस्ट लैंग्वेजेस है जिसमें डुअल केस होता है, यानी कि द्विवचन। इंग्लिश और हिंदी में जैसे इनको बोलेंगे वन हॉर्स, टू हॉर्सेस, मेनी हॉर्सेस। हिंदी में एक घोड़ा, दो घोड़े, अनेक घोड़े। नोटिस दैट डुअल एंड प्लूरल आर ट्रीटेड द सेम वे, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में इट इज एकः अश्वः, द्वौ अश्वौ एंड बहवः अश्वः। नोटिस हाउ टू एंड प्लूरल आर ट्रीटेड डिफरेंटली। फन फैक्ट, दुनिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस में ऐसा डुअल केस होता था, बट समय के साथ ये विलुप्त हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एंशिएंट ग्रीक में एक सिंगुलर पर्सन को बोलते हैं एंथ्रोपोस, दो व्यक्तियों को एंथ्रोपो और अनेक व्यक्तियों को एंथ्रोपी। Huh. Interesting. Well, I mean, it's the sheer fact that the S is dropped. I guess in English, it's anthropo would be something singular, and then when you add an S, would be plural. And it's kind of like, when you think of a single person, it's a person. When you think of two people, it's a couple. And when you think of like more than two, it's like many, or depending on what are you talking about. But yeah, huh. The fact that he's talking about how sometimes, I think he said, notice how the words for dual and plural are treated differently, but it disappeared with time. Fun fact, Fun fact, but a lot of the words in language used to have the dual case. Yeah. Like couple. I was thinking, I'm wondering if that's going to disappear, considering that, you either have one or many, I guess, and twos being many. There's, I guess, no reason to distinct two from many. Because many is many regardless. बहुत सारे लैंग्वेजेस में ऐसा डुअल केस होता था, बट समय के साथ ये विलुप्त हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एंशिएंट ग्रीक में एक सिंगुलर पर्सन को बोलते हैं एंथ्रोपोस, दो व्यक्तियों को एंथ्रोपो और अनेक व्यक्तियों को एंथ्रोपी। सिमिलरली, स्लोवेनियन में एक घर इज एना हीशा, दो घर आर द्वे हीशी और तीन घर इज त्री हीशे। क्रेजी बात तो ये है कि इंग्लिश में भी एक टाइम पे डुअल केस मौजूद था। फॉर एग्जाम्पल, फॉर टू ऑफ अस यू वुड से विट, and for many of us you would say we. Therefore, Sanskrit is one of the fewest languages जिसमें ये difference अभी तक बरकरार है। तो दोस्तों, that was all very common basic knowledge. Yeah, and I've heard also whenever I was doing, I think Sanskrit some time ago. Not me learning, but I think I delved in a video in it, or some people have talked to me in the comments. But I've heard that Sanskrit would have distinct words for distinct things. So there's
how to say, like kind of like in English, one word can mean many different things depending on context. But I believe in Sanskrit, like every one of those, not everyone, perhaps. Again, I'm not too sure, but I've heard that there are distinct words for this, for what could be used as one word. So you don't need the context per se. I would say that's pretty good and bad. Good because there is no confusion. You know exactly what they mean when they speak, but at the same time, your language gets massive. But that's the pros and cons of if you have one word that means many things, it could be confusing because it could mean almost anything. You have to look at the context, and even sometimes the context is not very good. And but the benefit of that is that your language is a little bit smaller and easier to translate or easier to understand. Whereas you look Sanskrit, the massive benefit, if it's true from what I've heard, then there's no confusing anything of what anyone says because every word is intended for a single use, a single purpose, and there's no confusing that. But then the language becomes bigger. कॉलेज अब चलते हैं हमारे आइसबर्ग के दूसरे लेवल पर पानी के जस्ट नीचे गीले करते हैं अपने पैर विद सम मोर एडवांस्ड संस्कृत फैक्ट्स लेकिन उससे पहले सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इंडिया इन पिक्सेल्स इज बैक विद अनदर ब्रांड न्यू कोर्स इंट्रोडक्शन टू डेटा स्टोरी टेलिंग 2 साल पहले हमने लॉन्च किया था इंट्रोडक्शन टू डेटा विजुअलाइजेशन का लाइव कोहोर्ट एंड आई एम हैप्पी टू शेयर अ न्यू एडवांस्ड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ दैट कोर्स इज बैक हियर अगेन First of all, I think you're an excellent teacher and you should, no matter what you do in life, you should always be a teacher. You are brilliant. 255. Yeah. It's becoming more like Germany's flag, isn't it? Yeah. This is exactly what data visualization is. इस कोर्स में आप सीखेंगे कि डेटा के साथ हम काम कैसे करते हैं और उसे एक कहानी के रूप में कैसे प्रेजेंट करते हैं चाहे आप जर्नलिज्म में हो या बिजनेस में सेल्स में या मार्केटिंग में टेक में या डिजाइन में ये कोर्स हर फील्ड के लिए यूजफुल है एंड सबसे अच्छी बात इसमें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है आपको प्री रजिस्ट्रेशन अभी लाइव है और हाँ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द डिस्क्रिप्शन तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे संस्कृत Hey, mad props to the dude for being an entrepreneur, man. I don't know how his courses is, but he's absolutely right with the visual learning. A lot of people do that. I am one of those people. And and it's, I mean, based on just that little preview, it seems pretty good. But again, don't take my word for it. Do not take my word for anything here. But, if this is something that obviously if you're interested in, I would highly suggest it. I am very much a visual learner. If you are, that might be a very good thing for you. आइसबर्ग की तरफ तैयार हो लेवल 2 के लिए चलो शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 5 द 4 वेदास 1500 बीसी से 500 बीसी के बीच का समय को कहते हैं वैदिक काल इसी टाइम पे वेदों की रचना हुई थी पर वेद एग्जैक्टली हैं क्या वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान या विजडम ये आता है फ्रॉम द रूट विद जहां से हमें मिलता है विद्या जनरली सबको पता होता है कि वेद 4 होते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ऋग्वेद काफी सारे की वैदिक गॉड्स के प्रेजेस के ऊपर है यजुर्वेद रिचुअल्स और सेरेमनीज पे फोकस करती है सामवेद ऋग्वेद की मंत्रस को म्यूजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करती है और अथर्ववेद मेडिसिन रेगुलर सेरेमनीज एंड कुछ मिस्टीरियस पावर्स को डिस्क्राइब करती है लाइक कॉन्करिंग योर एनिमीज और प्रोटेक्टिंग योर फ्रेंड्स फ्रॉम अ स्नेक अटैक चलो ये तो सबको पता होता है बट व्हाट इज लेसर नोन इज दैट हर वेद के 4 कंपोनेंट्स होते हैं I'm sorry to pause again, but I absolutely love whenever he goes from the language he's speaking to English. That's so much like my family. I just can't help but laugh because of how I don't know why they do this. Whenever I speak purely in the language unless the word does not exist in my language, then I would use the English word for it. Outside of that, it'll be purely the language. My uncles, my mother, my aunts, they sometimes go in between. I'm sure it probably happens a lot in India where you have them speaking. I'm assuming Hindi is the language, and then intertwining English in there. So it's just back and forth where they just say a whole bunch of Hindi, then maybe 2-3 words of English, and it's just kind of funny to me. Is because I mean, I guess because again, the way I speak is like why you're intertwining the language, But that's something that I noticed that my family does, and I'm also noticing that I guess maybe bilingual people may do that. I don't think so, but I think it's probably more along the lines if the country has 2 majority language
they do that. Now, my country's language, English, was definitely not the majority, but due to my parents and my on my mother's side being raised there, and then also knowing English, it just so happens to go that way. And all our uncles, all my uncles or my mom's sisters and brothers know both languages because it's kind of taught in that. It's I don't know why per se. Why is English taught in our country? But it is one of the languages that I was also taught whenever I was over there. Samhita, meaning the actual text with the mantras and the hymns. Brahmanas, which have the rituals and ceremonies के explanations. Aranyaks, जो कि forest treaties होते हैं, focusing on meditation and philosophy. And finally, the Upanishads, the last components of the Aranyaks, which have pure, deep philosophical discussions about the ultimate reality. इंटरेस्टिंगली कुछ हिंदू मानते हैं कि वेद एटर्नल हैं और ऑथरलेस हैं, मतलब ये नॉलेज हमेशा से एग्जिस्ट करती है। एक और एक्सप्लेनेशन है कि जब ऋषि मुनि अपने डीप ध्यान स्टेट में यूनिवर्स को फेस करते थे, तब उन्हें जो रिविलेशंस प्राप्त हुई वही वेद है। हर वेद का ना अपना एक एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, होत्रीज बेस्ड ऑन द ऋग वेद का काम होता है गॉड्स को प्रेज करना ताकि वो यज्ञस में इनवाइटेड फील करें। अध्वर्यु बेस्ड ऑन द यजुर्वेद हु आर लाइक द होत्रीज असिस्टेंट्स, जो कि यज्ञ के सारे रूल्स एंड कस्टम्स में माहिर होते हैं। फिर उद्गता बेस्ड ऑन द सामवेद, जो कि सॉन्ग्स और मेलोडी से यज्ञ का एक वाइब क्रिएट करते हैं। एंड फाइनली द ब्राह्मण्स बेस्ड ऑन द अथर्ववेद, जो कि पूरे यज्ञ के संचालक से होते हैं। ये डिविजन ऑफ प्रीस्टली फंक्शंस हमें यूरोप के सेल्टिक कल्चर में भी दिखता है, जहाँ पे ड्रुइड्स आर लाइक द हाई प्रीस्ट्स लाइक द होत्रीज एंड द अध्वर्युस, द बार्ड्स डू द चैंटिंग लाइक द उद्गतर्स, एंड द वेद्स परफॉर्म द एक्चुअल सैक्रिफाइस लाइक द ब्राह्मण्स। फैक्ट नंबर 6, वैदिक वर्सेस क्लासिकल संस्कृत। अगर आपने स्कूल में संस्कृत सीखा है तो आपको पता होगा कि संस्कृत काफी लॉजिकल लैंग्वेज है। हर नाउन के जेंडर और एंडिंग के बेसिस पे उस वर्ड का एक शब्द रूप होता है और हर वर्ब के टेंस के मुताबिक उसका धातु रूप होता है। तो एक शब्द को देखकर आप उसका सब्जेक्ट, एक्शन, टेंस, केस ये सब जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर द संस्कृत वर्ड अगमिष्यता। इसको हिंदी में हम कहते हैं वो दोनों गए होते। इस एक शब्द से हमें पता चल जाता है कि इसका रूट है गम यानी जाना, इसका लकार या टेंस है रिंग लकार मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसका केस है डुअल। एंड सो इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक ही वर्ड में पैक हो सकता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन, कुछ लोग संस्कृत को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह मानते हैं। बट हियर इज द ट्विस्ट, इस वैरायटी ऑफ संस्कृत को हम कहते हैं क्लासिकल संस्कृत, वही वर्जन जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था और वही वर्जन जिसमें वंदे मातरम लिखा गया है। ऋग्वेद की जो भाषा थी दैट वाज कॉल्ड वैदिक संस्कृत एंड वो क्लासिकल संस्कृत से थोड़ी अलग थी। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर कीजिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त के 10वें मंत्र को। इसको वैदिक तरीके से ऐसे पढ़ा जाएगा, आघात गच्छा नुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्न जामि। और क्लासिकल संस्कृत में तानि उत्तराणि युगानि आगच्छन्ति यत्र जामयः जामि कुर्वन्ति। नोटिस कीजिए कैसे क्लासिकल वर्जन थोड़ा फेमिलियर साउंड करता है विद वर्ड्स लाइक कुर्वन्ति या आगच्छन्ति। और हाँ, क्लासिकल संस्कृत में पिच सिस्टम भी नहीं होता। वैदिक भाषा एक Hold on, sorry. Like I'm sitting focused on reading, and I'm using my peripheral vision to see what's going on. Although that kind of caught my eye there. I was paying attention for the most part. I kind of understood it. संस्कृत में पिच सिस्टम भी नहीं। But this one, pitch system, I didn't know that. So, like I understood those were words, but I didn't realize that pitch of how, I guess it's obviously the tone or the pitch of the word, or perhaps the letter. I'm not sure. I don't know if they're words or letters, so you're gonna have to help me out there. There's the pitch is written. It is kind of done the same thing in other languages, obviously with periods, exclamation point, question marks, and all that. However, those are usually entire sentences. This ones are either the letter itself or the word. I do believe in Spanish they also have like the U, I believe, or the dash on top as well. The only reason why I know that is because in our language too,
we actually have 2 extra letters over the English language. I can't remember which 2 letters there were. It's been a very long time now. But that's interesting. So it's not just... I don't know if it's going to go over this, but I'll ask this now while I remember it. Is there like punctuation? I see a colon, colon over there. I don't know if that's part of the word or is that a colon or what is that meant to represent? Is there like periods, exclamation points, and question marks? Or is that used, or is those part of the pitch of the word itself? So based on the pitch of the word, whether it's you're, I guess, being expressive or making a statement or asking a question. I don't know if he's going to get to it. I figured I'd ask now before I forget. नहीं होता। वैदिक भाषा एक नेचुरल भाषा थी और हर नेचुरल भाषा की तरह इसमें काफी सारे इरेगुलरिटीज भी थे। 600 बीसी तक हाउएवर वैदिक संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंशज में कन्वर्ट हो चुका था, जैसे कि मगधी, शौरसेनी, गांधारी। एक एग्जाम्पल सुनते हैं। सच्चम जाणई दट्ठुम सरसम्मि जणम्मि जुज्जैराओ मरौण तुमं भणिस्सं मरणं विसलाहणिज्जं से निज्जरौ वन्नाणकमं शुद्ध सासयरुवोहं नियत्तु मे संयंसरणम् विश्ववर्म सस्त्रेतगस्पुत्रे इंद्रवर्म कुमरे सभर्यये हिमे शरीर परिठवेति। तब के गांधार और आज के अफगानिस्तान में बसे ऋषि पाणिनि ने सोचा कि ऐसा चलता रहा तो संस्कृत तो पूरा विलुप्त ही हो जाएगा। That is when he decided कि संस्कृत के Hold on, sorry. If this continues, Sanskrit would go extinct. तब के गांधार और आज के अफगानिस्तान में बसे ऋषि पाणिनि ने सोचा कि ऐसा चलता रहा तो संस्कृत तो आज के अफगानिस्तान में बसे ऋषि पाणिनि ने सोचा कि ऐसा if this continues Sanskrit, the sentence not making too much sense. So in the province of Gandhar in present day Afghanistan और आज के अफगानिस्तान में बसे ऋषि पाणिनि lived a Rishi Panini, though सोचा कि ऐसा if this continues Sanskrit would go extinct. चलता रहा तो संस्कृत तो पूरा विलुप्त ही हो जाएगा। That is when he decided to codify the rules of Sanskrit. So I guess the sorry, I keep rewinding it, but I'm trying to make sure I understand this. So deaf. Now, is he being like a current millennial or something like that by just shortening the word definitely? If this continues, Sanskrit would definitely go extinct, which would make sense to me. I'm just saying that because obviously, a lot of the, even probably including myself in this one too, but we tend to shortcut stuff, but that becomes a little bit of a problem if you're trying to teach people who don't speak the language. So let me know if I'm wrong. It says if this continues, Sanskrit would definitely go extinct. I'm assuming that for now because it seems to make sense, but yes. चलता रहा तो संस्कृत तो पूरा विलुप्त ही हो जाएगा। That is when he decided कि संस्कृत के रूल्स को उन्हें कोडिफाई करना चाहिए, एक फॉर्मल तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, एंड दैट इज हाउ क्लासिकल संस्कृत वाज बोर्न। एक तरीके से ये एक रिकंस्ट्रक्टेड भाषा थी। लेट्स लुक एट सम डिफरेंसेस बिटवीन वैदिक एंड क्लासिकल। वैदिक संस्कृत में रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स बहुत कम थे। साउंड्स लाइक ट ठ ड ढ ण। माना जाता है कि ये साउंड्स द्रविडियन भाषाओं से संस्कृत में आए। सो क्लासिकल संस्कृत में ये काफी ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि आपने देखा था, वैदिक एक टोनल लैंग्वेज है, उसमें पिच होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। जबकि क्लासिकल में ये सब नहीं थे। तीसरा, ये थोड़ा टेक्निकल है, वैदिक संस्कृत का विसर्ग दो ऐसे साउंड्स बना सकता था जो क्लासिकल संस्कृत में मौजूद नहीं है। एक को कहते हैं जिह्वा मूल्य और दूसरे को कहते हैं उपदमनिया। These make the sounds ख and फ, साउंड्स जो नॉर्मली पीपल थिंक आर उर्दू और पर्शियन बेस्ड। जिह्वा मूल्य या फिर द ख साउंड तब आता है जब विसर्ग क के सामने हो, और उपदमनिया यानी द फ साउंड वो तब आता है जब विसर्ग प के सामने हो। When a visarga is followed by a pa or pa, it's pronounced as an F sound. For example,
Dhiyo yo naf prachodayat. When a visarga is followed by a ka or ka, it's pronounced as a guttural sound. For example, Brahmana koshosi. एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैदिक में एक ऐसा साउंड था, एक ऐसा वावल जो क्लासिकल में मेंशन तो है बट कभी यूज नहीं होता, एंड दैट वावल इज र. कंफ्यूज्ड? लिसन अगेन. र. इस साउंड को कुछ ऐसा लिखा जाता है, एंड इसे बनाने के लिए आपको आपके टंग को आपके दांतों से जस्ट थोड़ा पीछे रखना होता है. ये पूरे संस्कृत के बस एक वर्ब में आता है, कल्प. फॉर एग्जाम्पल, लिसन टू दिस चैंट फ्रॉम द यजुर्वेद. सुगंच मे सुपथंच मरुद्धंच मरुद्धिश्च मे क्लृप्तंच मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे. Yep, that's the sound. But फन बात ये है कि ये वावल जो है ना वो ईस्टर्न यूरोप के कुछ भाषाओं में भी एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल इन स्लोवाकियन, by the way, which is different from Slovenian, जो हम last time discuss किए थे, there is this sound called kalb, which sounds very much similar to the Sanskrit verb. Kolb. Kolb. Boli ma kolb. Żbąknucie. Żbąknucie. And lastly, classical Sanskrit में बहुत सारे loan words Dravidian से आए हैं. A lot of people believe the word puja, for example, formed from the Dravidian words pu plus che, मतलब to do the flower or to offer the flower. क्योंकि वैदिक संस्कृत एक एलीट लैंग्वेज थी और बस कुछ लोगों को अलाउ किया जाता था वैदिक संस्कृत सीखने के लिए, शायद अगर पाणिनि जी ने संस्कृत को ओपन सोर्स नहीं किया होता तो मे बी हम आज संस्कृत नहीं बोल पाते. फैक्ट नंबर 7, क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न संस्कृत. पिछले फैक्ट में हमने देखा था वैदिक और क्लासिकल संस्कृत का सफर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संस्कृत का सफर अभी भी जारी है. आज की संस्कृत जो यंग लोग बोल रहे हैं वो संस्कृत का एक नया अवतार है. एक्सपर्ट्स इसे मॉडर्न संस्कृत कहने लगे हैं. मॉडर्न संस्कृत क्लासिकल संस्कृत से कुछ अलग है, जैसे क्लासिकल वैदिक से कुछ अलग थी. क्लासिकल में भी फिर इसको हम आधुनिक संस्कृत कहते हैं. पहले तो हम लोग कहते थे कि संस्कृत कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत. आजकल तो हम कहते हैं वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत एंड मॉडर्न संस्कृत. एक तरीके से दिस इज संस्कृत 3.0 विद अ फन यूजर फ्रेंडली अपडेट. क्या बदला है? चलिए देखते हैं. पहला, लकारों का सिंप्लीफाइड वर्जन. क्लासिकल संस्कृत में 10 लकार थे, यानी कि 10 टेंसेस थे. He reads, he read, he will read, let him read, imperative. He should read. He has read. Present preference. He had read. He's going to read. May he read. Benedictive. Had he read. Conditional. When we think of tenses, we only think of 2, present, past, and future. Other ones seems to be a bit more of a validation, or I'm not an English major, so, but I didn't know any of these. But I see what the meaning. Imperative means essentially he must read. Let him read. Potential, that he has the opportunity to. He should read. He has read. Present preference. Past preference. I'm assuming this is short for preference, or past perfect, or present perfect. Sorry, not present or preference. Let's go through it. Periphrasical future. Benedictive. There's a form to bless someone, there's a form to say someone must do, but modern में generally people use just 3, present, past और future. Second, English के शब्द. अब संस्कृत में काफी सारे शब्दों के लिए संस्कृत words हैं. For example, कंप्यूटर को संगणक कहते हैं. But modern संस्कृत में this is kinda accepted to use English loan words. दिलचस्प बात यह है देखना कि लोग मॉडर्न संस्कृत से कर क्या रहे हैं. Take a look at this. अनंततः सर्वत्र लभ्यते. मम शक्ति ही केवलम तत्वास्तविकम करोति. अभिसरणम विचलनम किम यदि कश्चित् एतत् स्पृशति स्म
शापित तकनीक विप्रिय रखता. Yup, Sanskrit anime. I totally see this getting a lot more popular in the future. Sanskrit mein people have been doing cover songs. ए हिरे प्रिया मधुर चंद्रिकायां नौमिले वनिरस्तस्थले प्रमोदते मना दोलायते मुदाम्बरम् आख्याति मन्मनश्चञ्चलायते नयहे मम हृदयेश्वर मातारांगण पारम. So अगली बार अगर कोई आपको बोले कि संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, उनको ये बताना कि संस्कृत isn't dead, वो थोड़ी देर के लिए सो गई थी. And now our generation can make it wake up back. चलिए, that concludes this level just below the water. Ooh, there is. Well, okay. Let me speak on that a little bit, actually, or a lot of it, maybe. So, about dead language and how language may be dying in certain cases, I have actually thought about this too. And there's this guy on YouTube. He looks like a white guy. He might be a white guy. I'm not sure. I don't know if he's part Chinese or not. He has kind of a Chinese name on YouTube. He goes and learns difficult languages, and he challenged himself to learn it, I believe, in like a very, very short time frame. And what is it? Essentially, he even learns like dying languages. Like, I believe he learned a Native American language that was kind of dying out. He went to the people and spoke that language. It's an Indian a Native American Indian tribe. Try to be specific there. And you know, it brought tears to those people's eyes because they said that, you know, they said that their language is dying because their children are not learning it. They don't want to learn it. And they're learning English because that's just the language that everyone obviously uses around here. Or that, and Spanish, I believe. There are many languages for sure, but it's just that, you know, their children is not learning the language, and they're saying, but there's this random guy that comes here and learns our language, you know? Why can't our children want to learn our language? And I get it, you know, I feel for the people, you know, because you got to look at it kind of two ways. If everyone knows a single language, we're all united, there's no miscommunication. There's no translation needed, so it's easy to communicate. But at the same time, we kind of lose some of the heritage heritage of the culture and the language that comes from. You know, it's kind of sad. But my only hope is that, you know, these people will be able to write how to learn the language, the alphabet, the structure of the language, the pronunciation of all the words that they can, and save it somewhere so it's at least preserved. And I know this is kind of happening in a lot of Native American Indian tribes and stuff. But, you know, how do I say this? Many languages have come and died too. You know, obviously the tribes had been wiped out by other tribe members. They got incorporated to other tribes. Even the one that's alive who could speak the language, who are incorporated to other tribes, have their language died. You know, it is just part of what you could say life. The only thing we can really do is that, at the very least, preserve it for those who wish to learn it. You know, I don't believe in forcing anyone to learn anything, but at the same time, I genuinely do feel sadness for people who see their language as, obviously, language is a very, very big part of the culture. It's how you communicate with each other. So, I was thinking when I was thinking about that, and whenever I saw this video, there's a reason why I saw this video. I started thinking about my own language, because my language is not the national language. I don't think any words from my language is part of the national language, because the national language for my country has two foreign languages in it, as well as the tribe of I don't know if tribe is the right word, the region, which so happened to had power. So that local language plus the two foreign languages kind of combined to make the national language.
So, and our language was not part of that. So I don't know. I don't know if our language is going to die or not. Our people is pretty, I want to say pretty strong, as in like we're warriors or anything like that. It's just we have a pretty large population, so I don't know if it's going to die or not. But yeah. Now let's move on to the next level. Fact number 8. Iran. Fact number 8. Iran. दोस्त एक बात बताओ, जब कोई ईरान मेंशन करता है तो तुम्हारे जहन में क्या आता है? शायद एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, पैराडाइज फॉर डिक्टेटरशिप, बेसिकली नॉट अ कूल प्लेस। देयरफॉर अगर मैं आपसे कहूँ कि ईरान इंडिया का यानी कि भारत का मेले में बिछड़ा हुआ भाई है, तो शायद आपका हैरान होना लाजमी है। यू सी, ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। 630 AD के अरब कॉन्क्वेस्ट से पहले ईरान एक ज़ोरोएस्ट्रियन देश था। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के आज बस 1 से 2 लाख फॉलोअर्स ही हैं, मोस्टली जो इंडिया में रहता है। बट एक टाइम पे ना ये रिलीजन ईरान के 3 महान साम्राज्यों का ऑफिशियल लैंग्वेज था। So I'm going to pause so I can look at the map without missing anything. So, Safavid Empire. Persian Empire. Empires like the Achaemenid with Cyrus the Great and the Parthian Empire and the Sasanian Empire. लेकिन ये सब मैं आपको संस्कृत के वीडियो में क्यों बता रहा हूँ? Well, let's start with the most holiest chant of the Zoroastrians. मुझे बताना कि आपको क्या वाइब मिलता है। यथाहु वेरियो अथारतश अशाचित जायवंगेहश दस्दामनिंगो श्योसनिनाम अंगेहश मजदाय शत्रिम चा अहुराय ओयम द्रेगोब्यो ददद्वास्तारे। ये हैं उस चैंट के लिरिक्स। नोटिस कीजिए हाउ सम ऑफ दीज वर्ड्स सीम एग्जैक्टली लाइक संस्कृत। यथा इज ऑल्सो यथा इन संस्कृत, वैर्य इज वीर और ब्रेव, मनो इज माइंड, ददत means to give. This seems like a version of Vedic Sanskrit basically. So, इस भाषा को कहते हैं आवेस्तान, जो कि मॉडर्न डे पर्शियन की एंसेस्टर थी। उसी तरह जैसे संस्कृत हिंदी की एंसेस्टर है। जिस तरह संस्कृत में लिखे गए थे वेद, द होली बुक्स ऑफ द हिंदूज, उसी तरह आवेस्तान में लिखा गया था गाथास, द होली बुक्स ऑफ द ज़ोरास्ट्रियंस। जिस तरह हमारा यज्ञ होता है, उसी तरह पर्शियंस हैव यस्ना, जहां वो भी अग्नि की पूजा करते हैं। एंड रिमेंबर कि ऋग्वेद का शुरुआत ही अग्नि जी के वर्शिप से होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सिमिलर कैसे हो सकता है ये सब। दरअसल ये सिमिलैरिटीज कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ओल्ड पर्शियन और वैदिक संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के एक ब्रांच से ही बिलोंग करते हैं। स्लैविक बाल्टिक इज अ क्लोज ब्रांच टू दिस। दोनों इंडो इरानियन यानी संस्कृत और पर्शियन और स्लैवो बाल्टिक लैंग्वेजेस लाइक रशियन और यूक्रेनियन में 100 को बोलने के लिए जो शब्द यूज होता है वो श या स से शुरू होता है, जबकि बाकी ग्रुप्स में क और ह से, लाइक किलो एंड 100। इसी रीजन से इन दोनों ब्रांचेस को शतम करके कहा जाता है, अंग्रेजों के लिए सैटम। और ये बस लिंग्विस्टिक्स तक सीमित नहीं था। वैदिक रिलीजन और आवेस्तान दोनों में फायर ही नहीं बल्कि हर उस फोर्स ऑफ नेचर को वर्शिप किया गया था जो लोगों को पावरफुल लगते थे, लाइक थंडर, विंड, रेन इत्यादि। जिस टाइम पे ऋग्वेद लिखा गया था ना 1500 BC में, उसी टाइम पे दुनिया के दूसरे छोर में एस्टैब्लिश हुई थी द मित्तानी किंगडम, जो कि प्रेजेंट डे टर्की सीरिया में बसा था। हम पाते हैं कि they also had reverence for Vedic gods like Mitra, Varuna and also Indra. Therefore, यहाँ तक प्री ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म और प्री हिंदुइज्म में एक कॉमन नेचर था। ईरान ने तो अपने यूनिक गॉड्स भी क्रिएट किए, लाइक गॉडेस अनहिता और तिष्ट्रिया। बट आफ्टर फ्यू सेंचुरीज ऑफ स्टेइंग अपार्ट, ईरान और इंडिया के कॉमन एंसेस्टर्स अपने अपने रास्ते चलने लगे। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म वेंट विद द अब्राहमिक अप्रोच and it got a prophet, a single prophet, Zarathustra, या अंग्रेजी में Zoroaster. He was the guy Nietzsche was obsessed with, featuring him in the title of his book, Thus Spake Zarathustra. Highly recommended, by the way. Zarathustra focused on simple things: good thoughts, good deeds, and good words. जबकि हिंदुइज्म में we kept our original pagan nature, allowing for a multitude of new gods and goddesses. हमारी दोनों कल्चर्स में एक कॉमन चीज भी थी। हम दोनों अपने आप को आर्य कहकर एक कॉमन आइडेंटिटी से रेफर करते थे। ज़ोरोएस्ट्रियन टेक्स्ट्स में they refer to their homeland as Aryanam Vaiha, meaning the territory of the Aryas, which comprised of 16 different lands.
सुनने में ये काफी आर्यवर्त से मिलता जुलता है, द लैंड ऑफ द वैदिक पीपल। दोनों जगहों में स्वास्तिका वॉज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल, जो कि आज भी हिंदू सेक्रेड मानते हैं। Swastika is important in Persian culture. It's this motif, the history back to date about 7,000 years ago. In fact, do you know that the present day term for the country Iran also comes from the root word Arya? वेदों में काफी जिक्र हुआ है about this drink called Soma. This was a very important part of any sacrifice rituals. और इंद्र को सोमा बहुत प्रिय था। Sorry to pause again, but there's just so many things. I saw the word Mazda. I wonder if Japan took that from that. Obviously the swastika has been kind of corrupted in the Western world, and by obviously a person. And then Soma. Again, I think I talked about this in the other video that dealt with Sanskrit itself. I definitely gotta. But anyways, Soma again is a very interesting video game, talking about we drink the Soma, we become immortal. We have attained the light of heaven. We have known gods. What now could the enemy do to us, or what, O immortal, should the agree ever do to the immortal? Agree ever? Sorry. Anyway, Soma. Soma. Okay, so drink. The squeeze of Soma clear the water, the skin, the juice become therefore enemy averting. The inviolable keen mingle this flesh Soma with the milk of Indra to drink. Drink hero, Indra's mouth. The green tainted Soma dear to the gods. Okay, anyways, Soma's a game that I actually really like because it makes you think about the self. It's a bit of more of a Western thinking of the self, and it's not. Is it deep? It is kind of deep, but at the same time, not. It depends on your perspective of it. But again, I wonder if they used the Soma word from, again, this one. I don't know how many, obviously, different words of Soma there is. But I would love, again, just to see where the inspiration, those people got the word for their game called Soma. Whether it came from this or something else. This drink is also mentioned in Avestan. The Iranians called this drink Hauma. Soma helped करती थी ऋषियों को to connect with the universe. Experts think that this Soma drink referred to this plant called Ephedra sinica, जिससे मिलता है ephedrine, a kind of psychologically active plant. Also, fun fact, this plant in Mandarin is called Sauma Huang, which is still to this date used as a Chinese medicine. Zoroastrians और Hindus में एक मेजर डिफरेंस ये भी था कि Zoroastrians का सुप्रीम गॉड थे Ahura Mazda. Notice how this sounds like Asura. Remember how the Iranians convert Sa to her, Sindhu to Hindu, Soma to Homa. Vedic tradition में Devas were the good guys, जबकि Zoroastrianism में Devas were the bad guys. Indra was name of one such Deva or a demon in Zoroastrianism. In fact, Avestan में legit एक मंत्र है घर के शुद्धि में जो यूज होता है, उसमें specifically एक लाइन है to say इंद्र बाहर निकलो, go away. Research करते हुए I also found that Assyria में बकायदा एक city था called Ashur, जहाँ guess who was worshipped? Asura, the main god of that region. This was located south to the supposed Arya homeland. Could it be that this was the land that the Aryas referred to as the ancient Patal Lok? Asuras वैसे were not considered to be the bad guys all the time in the Vedas. This is accepted by a lot of experts. आपने अपने बुक में लिखा है रामायण रिवील्ड में एक आपने टर्म है जो जिसको हम असुर बोलते हैं, तो इसके बारे में इफ यू कैन टेल अस मोर, क्योंकि हमारे मन में असुर का मतलब यही रहता है कि ये राक्षस है, बुरा बीइंग है, बट यू हैव एक्सप्लेन्ड समथिंग एल्स इन द बुक, तो इफ यू कुड स्प्रेड सम लाइट ऑन दैट. श्योर. सो असुर, देखिए वेदों में अगर हम जाते हैं ना, सो वेदों में असुरत्व मीन्स स्ट्रेंथ. सो असुरत्व जो है वो एक टर्म है विच इज even used for some god. जैसे कभी कभी वरुण को भी या मित्र को भी असुर बताया गया है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, तो वो बहुत स्ट्रांग है.
तो ये हमें समझ में आता है कि इट वाज नॉट अ प्योरली नेगेटिव टर्म शुरू में। ऐसा लगता है that due to some political clashes, वैदिक आर्य और पर्शियन आर्यों में कुछ झगड़ा जैसा हो गया and they accepted different gods. The Vedic Aryas stuck to their Indra-based worship, while the Persian Aryas seem to have adopted their Assyrian god Ahura और Ashura. बट पता है क्या, ये आर्यों के बीच झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से होती आ रही है. As we just saw between Sanskrit and Persian speakers, then we later see between Kauravas and Pandavas, between Punjabis and Haryanvis, and Let me look at this real quick. In the Vedic times, even amongst the Aryan tribes. So there's a lot of, in some sense, you could say civil war, but it wasn't a true civil war. Obviously, there are many different tribes of the earlier parts of India. You can kind of see the growth of whichever tribe. Wow. So the PEPSU, I guess, got engulfed by Punjab. Delhi stayed strong. As small as a city, country, or town that is, it stayed there the entire time. Woo! Then the Punjab get pushed back by the Haryana. If I'm reading this correctly, Chandigarh. This is, and then, I don't know. I remember another thing that kind of reminds me of this is there's this one YouTube channel that talked about, I think it's the history of the world, and it's kind of crazy whenever you look at China, where there's just constant fightings among the Chinese people too. It was a very, I think it was a very, very long fight, and also reminds me of one of my favorite movies called Hero with Jet Li in it. वैदिक काल के दौरान बिटवीन आर्य ट्राइब्स ऑल्सो, जैसा कि हम देखते हैं ऋग्वेद में दशराज्ञ युद्ध और द बैटल ऑफ द 10 किंग्स, जहां भारत ट्राइब के सुदास के गुरु विश्वामित्र वाज एंग्री व्हेन ही वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्रीस्ट वशिष्ठ, सो ही हेल्प्ड 10 किंग्स फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स टू वेज अ वॉर अगेंस्ट सुदास. सुदास won, but instead of humiliating his opponents or killing them outright, उन्होंने कुछ बहुत strange किया. उन्होंने उनसे दोस्ती कर ली and उन्होंने बोला कि the Aryas will start worshipping the gods of the defeated tribes. And maybe that is how Aryas started worshipping idols, something that was a common practice in the non-Aryas. And शायद इसी tolerance की वजह से आज हिंदुइज्म हर किस्म के belief system को accept कर लेती है. तो अगली बार जब आप ईरान के बारे में सोचें तो याद रखना कि this is not just a Muslim देश. ये एक ancient civilization भी थी जिसका भारत के साथ एक गहरा रिश्ता है, जहां वैदिक ऋषियों ने यज्ञ आर्किटेक्चर से बनाया सुलभ सूत्रस, द होल फील्ड ऑफ ज्योमेट्री, एंड ऑल्सो रेवोल्यूशनाइज्ड मैथ्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो और शून्य. हमारे आर्य बांधव पर्शियंस ने अलजेब्रा और फिलोसफी में पारंगत हासिल की. ऑल्सो द आर्य ट्रेडिशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी इज कॉमन टू बोथ हिंदूज एंड इरानियंस. सो या, मे बी वी डोंट सेपरेट ऑन वेरी गुड टर्म्स, बट कंसिडरिंग दैट सो मेनी ज़ोरोएस्ट्रियंस आज भारत के शान है, I guess we kind of still embraced each other. And just like that, we come to the end of our level deep waters. And समय and audience retention को ध्यान में रखते हुए, end of our video also. Something tells me कि Oh, sorry, I wasn't looking at the comments. I was just looking at them scrolling through that. Yeah, I feel you, brother, man. About the same too. And just like that, it's probably my fault for speaking too much. Hold on, I gotta read what he said. And audience retention. Oh yeah, there's no. What happened to the CC? So I mean, obviously I understand what he's trying to say. It's like the retention starts. We got ADHD up in here, you know, short-term memory, or sorry, short-term attention span. ध्यान में रखते हुए end of our video also. Something tells me कि हम समुद्र तल तक पहुंचे नहीं हैं. ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे facts और भी बाकी हैं. Iceberg और भी deep जाती है, hiding many more रहस्यमय facts about the Sanskrit and the Arya people. If that is something you would like to explore, maybe in a part. All right, I guess that was the end of the video. I thought. Anyways. So very interesting. It was kind of hard to kind of follow a little bit. It was going pretty quickly, and I was mostly reading the comments as I was trying to follow with my peripheral vision on the visuals going on. Again, he did talk a bit about history, about India and the different tribes within India itself, the relation with Pakistan and India. India, Pakistan and Iran, mostly with Iran, of course. How the split was there. And how
didn't end necessarily good terms, and generally that's kind of sad. But I mean, what can you do? The only thing I can say is that hopefully we can keep the past in the past and move on with the future. Um, but we are human beings, we're severely flawed, and hopefully, with some great philosophy, we can move past certain things. But anyways, this was very interesting for sure. I learned about the pitches in Sanskrit, although I don't know. No, he did give an example of it, but I wish he'd give an example of one with and with. I know he gave an example, and I noticed the guy was like going up and down like that. But I think there was a difference between the classical and the Vedic, right? I can't remember which one had the pitches in it. I wish it gave one without and with, so I can kind of see the flow of it. Although I'm sure we can kind of guess a little bit. And then what else? And again, speaking about the language dying, hey, look, it's up to the people in those countries to keep it alive. Kind of like, and within my own people and within any groups of people whose, people are not learning their cultural language. Again, I'm not here to force anyone. I don't wish for any language to die. One thing I will hope for, if that the language is going to die, is that some document how to learn the language again. It could be revived. It could be for people who love to learn an ancient language. That way at least it'll be through us throughout the entirety of history, even if it's not been spoken for a long time, but at least it's there with us in modern day, versus a lot of the other languages who have died and gone away because whatever so happens to happen to their culture and their language, it happened, and nothing we can do about it now. But at least at this very moment, we have YouTube. It's weird to say that. We have YouTube to save the language, but we have YouTube in documentation type equipment. I don't know what the right word to say, but we have ways of preserving the language, at least. Well, hopefully the internet will last forever, and it'll be preserved on the internet for those who wish to learn it. That way the language could never truly die. No matter whether no one learns it or not, it's there for anyone to read or to watch and learn how to speak the language itself. This is something that I always found really cool, where you can go to say a country and speak if I were to speak my native language, and even in my own country but not in my area, they wouldn't understand it, because it is something it's a language that's from my people. So even within my own country, I'm sure India has that too, where they have certain languages that are not very well spoken of, and you go to just another part of India, you have a secret language that you can talk between you and your friend or your other people right in front of people's faces, and they would have no idea what you're talking about. I always find that pretty cool. So that's my reaction to the Sanskrit Iceberg. Explain. If you like my content, please consider subscribing, thumbs up the sound down below. Thanks for watching. I will see you in the next vid.